Welcome viewers, you're now watching Hornbill TV's Prime Time. First the headlines. In a major boost to the region, Prime Minister Modi on September 13th will inaugurate the new Bairabi-Sairang railway line and Sairang railway station in Mizoram. The NIA has arrested an accused of the Muzaffarpur AK-47 seizure case. The arrested person, Manzoor Khan, a close aide of prime accused Vikas Kumar, and was involved in smuggling weapons. Security forces recovered a large quantity of arms and ammunition during an anti-naxal operation in the Abuchmat area of Narayanpur district, an official said. 3 people died and 5 were injured in Indonesia after protesters set fire to a regional parliament building, authorities said on Saturday. Those were the top headlines, and now for the news in details. One Notice and RNDC along with the Unity College Dimapur today held a panel discussion on the topic 6th schedule. Tipra Accords and negotiating the future of Northeast at IMC Hall, Dimapur. The panelists that included eminent personalities like Tripura's royal scion Pradyot Debarman, ex-MLA Monlumo Kikon, Patricia Mukim, editor of Shillong Times, and ex-councillor David Langthasa. During the question and answer round, Hornbill TV asked about the negative narrative set by mainstream media on Meghalaya over the Raja Raghuvanshi case and how regional media should be more assertive. Patricia remarked that it was up to all citizens with social media to stand up for such reviews. She further asserted that it was sad that there was yet to be a forum for Northeast Journalist Forum. Thank you so much, Unity College and One Northeast, for giving us, the media, especially the Nagaland media, a chance to be a part of this discussion. I've got 2 questions for the respected panel, one for Ma'am Patricia and one for Daniel. Ma'am, this might come off the tangent that we are speaking about, the topics that we are speaking about. But nowadays you said that we have failed as citizens, we don't raise voices. Ma'am, in this context, ma'am, the recent Raja Raghuvanshi case had literally put Meghalaya in damage control mode. That was only narrated by the mainstream media and not regional media, because we regional media, we really tried. Now talking about the 6th schedule or the Tipra Accords and even what is going to happen or negotiating the future of the Northeast. Ma'am, no matter what happens, the media is responsible for spreading of information. How do us regional medias maintain a balance that even though the narrative is coming from mainland, we have our own set of narratives? Thank you for that question. It's excellent. Of course, it's beyond the 6th schedule. The worst sort of news report was from the Times of India, which called Meghalaya the crime-prone hills. So what did we do? As a citizen, as somebody who has some form of opening through social media, I put that up on my Facebook page. I did hashtag Times of India, how dare you write such a piece of news? And actually that went to the Times of India, and then they pulled it down. They pulled it down. Of course, there were others. I think our Chief Minister also pointed that out. But it's important for every citizen to stand up here. What is the point of having a social media page or a Facebook page or an Instagram page if we post only pictures? It's about posting critical issues as well, because your social media reaches the entire country and beyond. I think we need to also educate ourselves on how to take on critical issues that are floated by the mainstream. The mainstream media has done extensive damage to our region, short of calling us primitive and backward and all that. So we need to form a conglomerate here. We need to form, I was just saying yesterday that we don't even have a Northeast Journalist Forum, which is very sad. I think we should
be having that, we should form that very soon, so that we can contest what the so-called mainstream media does. Because how can somebody sitting in Madhya Pradesh, construct a whole story about Meghalaya? They haven't even visited the place. I'm sure that woman who wrote it, it was a woman reporter. She doesn't know this place. She only heard and she only saw a lot of it from electronic media, and then made her report. This is happening all the time, and every time we see this, we need to contest it. Recently, a piece of video went viral about a minister, Deputy Chief Minister, pointing his fingers at a journalist and saying, "You should not be here whenever I give a press conference." I think that is so unwarranted. And yet, we didn't have the entire country coming together to condemn that piece of nonsense, actually. And the Wire did. The Wire did, yes. So, if we do not build solidarity now, we're going to lose our solidarity forever. And without the media, there can be no really foundational democracy. In a major boost to the region, Prime Minister Modi on September 13th will inaugurate the new Bairabi-Sairang railway line and Sairang railway station in Mizoram, connecting Aizawl to the national network for the first time. The construction of 51.38 km Bairabi-Sairang railway line spanned 2 decades, culminating in its successful commissioning by the Commissioner of Railway Safety in June this year. Nilamjam Dev, the Public Relations Officer of the Northeast Frontier Railway, said that the length of the Bairabi-Sairang project is 51.38 kilometers and there are 48 tunnels and 148 bridges, of which 55 are major bridges. One of the major bridges has spires with a length of 114 meters, which is 42 meters taller than the Qutub Minar. This makes it the highest bridge in the section and the second highest spire bridge in Indian Railways. He also added that PM Modi laid its foundation stone in 2014 and within 10 years this project was completed. With this, Mizoram becomes the 4th Northeast state to be directly connected to the Indian Railways network. कितना लोगों के लिए फायदा होगा, खासकर मिजोरम के लोगों? देखिए, हम लोग अभी जो खड़ा है ये ब्रिज नंबर 196 है। ये जो भैरवी सायरंग प्रोजेक्ट है ये टोटल 51.38 किलोमीटर लंबाई है। उस एंटायर सेक्शन में हम लोग का 48 टनल्स है और 148 ब्रिजेस है। 148 ब्रिजेस में से 55 हो गया मेजर ब्रिज। मेजर ब्रिज में से ये एक है। इसका खासियत यही है कि इसका जो पायर्स है, मतलब आप लोग देख रहे हैं जो पायर्स है, इसका ऊंचाई है 114 मीटर्स, जो कुतुब मीनार से भी 42 मीटर्स का ज्यादा ऊंचाई है। तो ये इसलिए ये ब्रिज इस सेक्शन का सबसे ज्यादा मतलब ऊंचा ब्रिज है जिसका पायर, और इंडियन रेलवे में अभी तक का ये सेकंड हाईएस्ट पायर ब्रिज है। अच्छा, दूसरी चीज लोग अब किस तरीके से इसको यूज कर पाएंगे? देखिए ये भैरवी सायरंग प्रोजेक्ट अभी उद्घाटन के तैयार है। इसका जो फाउंडेशन स्टोन 2014 में ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखा था, तो 10-11 साल में ये प्रोजेक्ट आपको उद्घाटन के तैयार है। तो इसमें मेन खासियत है कि इसके साथ साथ मिजोरम उत्तर पूर्व का चौथा ऐसा राजधानी बन गया जिसका जो डायरेक्ट भारतीय रेलवे का जो नेटवर्क है उससे डायरेक्ट कनेक्टेड हो गया। अभी यहाँ से मिजोरम का लोग देश का किसी भी राज्य से डायरेक्ट जा सकता है। इसी तरीके से कोई भी जगह से सामान हो, फूड ग्रेन्स हो, तेल हो, कुछ भी हो, यहाँ में डायरेक्ट आ सकता है। लगता है कि अगर इकोनॉमिकली देखा जाए और बिजनेस की बात की जाए तो मिजोरम के लोग या नॉर्थ ईस्ट लोग कटा हुआ पहले महसूस करते थे, खासकर मिजोरम और नागालैंड को देखा जाए तो कितना फायदा होगा जब यहाँ से एक तरह से गुड्स जो है वो जा सकेगा? नहीं, देखिए यहाँ ये जो लैंडलॉक स्टेट्स है नॉर्थ ईस्ट का, ये लोग के लिए रेलवे लाइन एक वरदान स्थापित होगा, क्योंकि ये जो है अभी जो सिस्टम है रोड नेटवर्क है काफी अनरिलायबल है। लैंड बिल्कुल हम ज्यादा बारिश होता है, लैंडस्लाइड होता रहता है, तो ये कम्प्लीटली एक अनरिलायबल सिस्टम है। जिसका तो एसेंशियल हो चाहे नॉन एसेंशियल कमोडिटी हो, उसका जो मतलब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से काफी लागत भी ज्यादा होता है, टाइम भी ज्यादा लगता है। अभी ये रेलवे लाइन कंप्लीट हो जाने से हम लोग मिजोरम के लिए एक रिलायबल स्टेबल कनेक्टिविटी हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे मिजोरम का लोगों का आर्थिक वृद्धि में बहुत सहायता होगा।
सामान जो है बिना बाधा सायरंग तक मतलब आइजल तक पहुंच सकते हैं। और मिजोरम का जो मेन आपका स्टूडेंट्स है, चाहे पेशेंट्स है, चाहे ट्रेडर्स है, उनको लिए एक सहजलभ्य हो यातायात का सुविधा भारतीय रेलवे ने प्रदान कर रहे हैं। कब इसका इनॉग्रेशन? इसका इनॉग्रेशन फिलहाल आपका सितंबर महीने का सेकेंड वीक तक माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा होना लगभग तय है। अभी क्या कोई काम बाकी है? नहीं, अभी मेन तो ट्रेन चलाने लायक जो काम जरूरी है वो हो चुका है। बाकी जो मेंटेनेंस के लिए जो काम जरूरी होता है वो काम चल रहा है। We'll now take a short break. Stay tuned. आधी आबादी को पूरा अधिकार देने के अभियान में साथी और सहयोगी की भूमिका में है डबल इंजन सरकार। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों ने उत्तर प्रदेश की नारी का किरदार कैसे बदला, इसका दर्पण है मिशन उन्नति। इसके अंतर्गत एक सूचकांक विकसित किया गया है जिससे सरकारी प्रयासों से हो रहे महिला सशक्तिकरण को मापा जा सकता है। महिला आर्थिक सशक्तिकरण सूचकांक WEE इंडेक्स के अनुसार उत्तर प्रदेश ने पिछले 8 वर्षों में महिला श्रम बल में हर वर्ष वृद्धि दर्ज की। 2017 के बाद हुए इस बदलाव का आधार बनी चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था एवं मिशन शक्ति का विजन, जिसने महिलाओं को सुरक्षित बनाया, स्वावलंबन का मार्ग भी प्रशस्त किया। व्यवसाय, तकनीक एवं अन्य क्षेत्रों में महिलाओं के कौशल विकास और प्रशिक्षण से सरकारी नौकरियों में महिलाओं की संख्या में लगातार वृद्धि हुई। विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों ने स्वयं सहायता समूहों, आसान ऋण एवं उद्यमिता को प्रोत्साहन देकर आत्मनिर्भरता के नए द्वार खोले। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। Take charge of your health. Knowing your HIV status is the first step. If you have HIV, you can still protect yourself and others. In a breaking news coming in a shocking incident, a reporter of the Nagaland-based satellite news channel Hornbill TV was shot in the evening hours of Saturday, August 30 in Lai village in Senapati district of Manipur. Reporter Deep Saikia was on an assignment to cover a flower festival called the Zinnia Flower Festival at Seat village when an assailant shot him. Curiously, Deep Saikia was recently caught in a viral controversy when the Nagaland Deputy Chief Minister Yantungo Patton publicly rebuked the reporter during a public meeting on a reporting matter. Initial visuals were received here showed Saikia suffered wounds in the armpit. It is informed that he was shot in the legs too. Please stay tuned for more details in this regard. The identity of the assailant, a youth, is being ascertained at this time. He was apprehended by the villagers and was being held for questioning at this time this report was going to air. A first information report has been filed and efforts are currently on to identify the identity of the assailant. Hornbill TV is taking this matter seriously and the TV channel should pursue all legal and investigative courses available to ensure this matter is brought to its logical conclusion. An aspect of the crime is the nature of the gun that was used. Initially, reports point to a certain type of air gun which can kill, according to people with knowledge of guns. The management and staff of Hornbill TV denounced this attack on our reporter and the blatant employ of violence for whatever the goals the assailant wanted to achieve. We assure our full cooperation to the investigation authorities in investigating this case and delivering justice for attempt on the life of our reporter. We extend our deepest sympathies to the family and loved ones of Deep Saikia and wish him full recovery and health. Heading on to the next news.
The Assam Congress staged statewide protests on Saturday against Cabinet Minister Ashok Singh's controversial remark in which he allegedly likened the Congress party to Jontu, which refers as animals. The Assam Pradesh Congress Committee APCC held a demonstration at Banabendra Kshetra in Guwahati, condemning Singh's statement made recently in his constituency. APCC leader and advocate Ritam Singh said, quoted, he has lost his mind. It is unacceptable to call a political party an animal. Such remarks violate the constitution and we will file a petition against him. Quoted, Kamrup District Congress President Tapan Das also joined the protest, saying that all Assam Congress workers are agitating under the leadership of APCC President Gaurav Gogoi. The minister should feel guilty and issue an apology. The Guwahati City Congress also passed a resolution condemning Singh's remark. आप लोग को मालूम है कि अशोक सिंघल जो असम सरकार के एक मंत्री है, उसने कांग्रेस दल को बारे में जो टिप्पणी किया था, कांग्रेस दल को एक जंतु माने जानवर बोल के वो लोग माने यूज किया था, वो शब्द यूज किया था। उसकी प्रोटेस्ट में आज हम लोग गौरव गोगोई जी के निर्देश के अनुसार हम लोग गुवाहाटी सिटी कांग्रेस ने आज एक धरना कार्यसूची लिया था, क्योंकि हम लोग का डिमांड था, उसने जो ये वर्ड यूज किया था जंतु यानी जानवर, वो वर्ड के लिए हम लोग का दाबी है, डिमांड है कि वो। The NPP Jirang bloc, in collaboration with Sostines Sotun, MLA or MDC of the constituency, today successfully organized a special program to felicitate students from different schools under the Jirang constituency Umling bloc, who secured top positions in the recently declared SSLC examination. Through this program, the NPP Jirang bloc also extended its felicitation to the principal of various schools along with the students who excelled and passed with distinction. The program, held at the parish hall of St. Francis Assisi, Birnihat Parish, was graced by Rupert Momin, chairman of the Meghalaya New and Renewable Development Energy Agency and MLA of Kharkutta, and the chief guest, and Ba Savio Bla, DSEO of Riboy, as the guest of honor in the presence of local MLA. MDC Sostens Sotun. The event was also attended by principal, teachers and students from different schools across the Birnihat area. As Sotun is also chief whip of the Legislative Assembly, Government of Meghalaya, and Sri Bla, District School Education Officer of Riboy District Numpo, and parish priest of this parish, and all the principals. Generational. That hard power, we talk about America, Western countries, we talk about Russia, and the Asian giant country like China. They use the hard power to conquer, to snatch the territory of others. Now we talk about soft power. The global community talk about soft power. What is soft power? As you said, we have unity and diversity. In Riboy district, place like Zira, constituency like Zira, we have so many students right from 2018, after being elected as the MLA of then Jirang constituency, and it's through the committee which is helping each other to make this program a success. And in previous years we used to have the whole constituency at the same time. We have two blocks, Umling block and Jirang block. But this time, so many students have. We'll now take a short break. Stay tuned.
মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ বুঢ়ালুইতৰ বৰ পুত্ৰ তেওঁ বৰেণ্য অসমীয়া জাতিক সমৃদ্ধ কৰা তেওঁৰ সৃষ্টি চিৰযুগমীয়া প্ৰতিটো প্ৰজন্মৰ প্ৰেৰণা তেওঁ তোমাৰ উষা কুমা কোমল বিমূৰ্ত মোৰ নিশাতি যেন মৌনতাৰ বিশ্বত অসমৰ ঠিকনা তেওঁ সৃষ্টি তেওঁ কৃষ্টি তেওঁ মানৱ প্ৰেমৰ অনিৰ্বাপিত বন্তি তেওঁ উত্তৰণৰ আশা দিলে সংস্কৃতিক ভাষা দিলে সুৰ সংগীতেৰে জাতিক দিলে মান বিহুৰেনো বিৰিণা ও আইতা কি ৰুমনি ধুৰিয়া তাতে সমনীয়া ও আইতা ভাৰত ৰত্ন তেওঁ অগ্ৰগামী বিশ্ব নাগৰিক সুধা কণ্ঠ তেওঁ অসমীয়াৰ বুকুৱেদি বোৱা আবেগৰ ফলগুধাৰা বজালি যে পেম্পাতি গংগা পদ্মা মিছিছিপিৰে মহা মহাসাগৰলৈ বোৱাই নিলে স্বদেশ স্বজাতিৰ অভিমান অনাদিকাললৈ বিয়পি থাকক সুধা কণ্ঠৰ সুবাস ভূপেন্দাৰ সৃষ্টি সংস্কৃতি সংৰক্ষণ কল্যাণকামী অসম চৰকাৰৰ অভিলাষীপন আমি বছৰজোৰা কাৰ্যসূচীৰে ৰাজ্য চৰকাৰে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ শতবাৰ্ষিকী পালন কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে বছৰজোৰা জন্ম শতবৰ্ষ উদযাপনৰ অংশ হিচাপে অহা 13 ছেপ্টেম্বৰত মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিত গুৱাহাটীত আড়ম্বৰপূৰ্ণ অনুষ্ঠান হে জাতিৰ স্পন্দন আপোনাক অযুত বন্দন Ready? 3, 2, 1, cue. And we all need a little more clarity under the details. About life, people and events that truly matter. Because sometimes news is more than mere information. From credible news organizations, credible news, and from credible and award-winning journalists. Because proper news can not only inform our lives but also change the way we look at it. In-depth and straight to the point because the truth deserves clarity. We pursue events that are not only important to you but also useful for our life's perspective. We are Hornbill TV. Join us every month on Health Talks on Hornbill TV, your trusted health show. Welcome back, viewers. Heading on to the next news. Security forces recovered a large quantity of arms and ammunition during an anti-naxal operation in the Abuchmat area of Narayanpur district, an official said. Narayanpur Superintendent of Police Robinson Guria stated on Friday that a joint operation was carried out on August 24 by the District Reserve Guard, Special Task Force and Indo-Tibetan Border Police. On Wednesday, 13 Naxals surrendered and were rehabilitated in the Bijapur district of Chhattisgarh's Bastar region, officials said. Chhattisgarh Deputy Chief Minister Vijay Sharma stated that the surrender and rehabilitation of 13 Naxals in Bijapur had been the result of the state government's rehabilitation policy, the efforts of security forces and ongoing development work. He also urged Naxals to join the mainstream and improve their lives. अभी 24 तारीख को
हमने DRG, STF और ITBP की संयुक्त पार्टी नक्सल अभियान के लिए लॉन्च किया था। इसमें मुख्य रूप से जो ग्रेडेड वेपन्स आप देख पा रहे हैं, LMG, SLR है, इंसास है, 3 असॉल्ट राइफल है, 51 mm मॉर्टर भी है, जो कभी ना कभी नक्सलियों द्वारा हमारे पुलिस जवानों से लूटा गया होगा, वो हमने रिकवर करा है। और साथ में जो इनके कंट्री मेड है, जो खुद जो इनकी TD टीम डेवलप करती है, वो सारे हथियार भी हमें मिले हैं। और साथ में कोडेक्स वायर सेफ्टी फ्यूज की भी भारी मात्रा में मिली है। और साथ ही साथ इनके जो BGL लॉन्चर्स हैं और BGL सेल्स हैं, ये भी भारी मात्रा में मिला है। सर, ये ऑपरेशन क्या एक ही जगह से, एक ही ऑपरेशन में मिला है और एक ही जगह से मिला है? ये पूरे मार्च क्षेत्र में हमने अलग अलग जगह से ऑपरेशन लॉन्च किया था। तो मेन टारगेट ये भी था, हमें आसूचना थी कि बहुत सारे लोग जो सरेंडर कर रहे हैं अपने वेपन्स अंदर डंप करके आ रहे हैं। तो एक कंपनी लेवल पे या फिर डिवीजन स्तर पे ये सब लोग एक जगह डंप कर रहे हैं। तो इसमें से 4-5 डंप से सारा सामान बरामद हुआ है। सर, इनमें जो ऑटोमेटिक वेपन है वो कौन-कौन से वेपन है और ये इसकी क्वांटिटी कितना होगा? ऑटोमेटिक वेपन इसमें मुख्य रूप से LMG मिला है 7.62, फिर इंसास है, SLR है और एक 3 असॉल्ट AK-47 भी है और 51 mm मॉर्टर में है। सर, ID से संबंधित कोई मटेरियल रिकवर है? ID से संबंधित हमें कोडेक्स वायर मिला है 2 बंडल और करीब 70 से 80 बंडल हमें सेफ्टी फ्यूज वायर मिला है, जो ID बनाने में उपयोग होता है। सर, ये मानसून के दौरान जो है ये हथियार बरामद किए गए हैं, कैसा चुनौतियों जो है जवानों अभी मानसून में क्योंकि बारिश अभी बहुत ज़्यादा हो रही है और साथ में इधर ऑरेंज अलर्ट भी था इस जिले में, उसको देखते हुए भी अपने कमांडर ने अच्छे से प्लान को एग्जीक्यूट किया है। और जितनी भी कठिनाई हुई वो तो फील्ड में होती है, उसके साथ ही हमने मानसून में ऑपरेशन लॉन्च किया है। और कहीं ना कहीं अपने जवानों का जो मनोबल है वो बहुत अच्छे से शीर्ष पर है। और मार्च 2026 का टारगेट बहुत क्लियर है, नीचे फील्ड यूनिट एक जवान तक, तो उसके तहत कार्रवाई हो रही है। सर, ये 4 व्हीलर रिमोट स्विच जो बरामद हुआ है, ये किस काम में आता है? ये जो 4 व्हीलर का रिमोट स्विच है, ये बेसिकली रिमोट कंट्रोल्ड IDs के लिए होता है। तो वो भी 4 नग हमें बरामद हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो दूर से रह के रिमोट ऑपरेटेड IDs ये बनाते हैं, उसमें ये हेल्प होता है। कौन-कौन सी टीम जो है वो ऑपरेशन में शामिल है? इसमें मुख्य रूप से DRG और एक टीम STF की थी एंड ITBP की भी बिल सपोर्ट। There was on the anti-naxal operation in Chhattisgarh. That's all for now. Thank you for watching Hornbill TV.